Lecture 19, Case Study, a Success Story in Small Scale Business. Content for Session 19. In this session, we are going to study the success story of the student in his small scale business. Now, the product name is MGNCRE Trees. Now, let's discuss about the brand. This tea endeavors to provide the best tea and tisanes that are ethically sourced from different corners of Himachal Pradesh. Our whole leaf teas are handmade that are sourced directly from the tea gardens at Palampur, and our tisanis are not matched to any natural source tisanis anywhere. We have limited offering and concentrate on providing the best in class experience to our lovely customers. Our aim is to consolidate the best natural tea and tea sunnies that Himalayas have to offer bundle with our premium offering. Now let's discuss the products that we offer. First is Guranu tea, a beautiful tisani made of pure and ingredients organic herb from the Pangi village of Himachal Pradesh. Guranu has a dark golden liquor and is very fragrant on the nose and top note of segment, caramel and tuberose. Now next is black tea. Palampur black tea is a handmade tea sourced from small tea growers of Himachal Pradesh. It has smoky note and minimum tan which make it a excellent everyday tea that can be drunk with milk and sugar. Last is green tea. Palampur green tea is rich in antioxidants. This low caffeine tea has a smoothing taste without any bitterness. Our marketing strategy majorly focuses on person sale and brand marketing, where we also offer sampling and testing. We have been in talks with every major cafe and supermarket in Chandigarh. We are also very active on various social media platforms, and we really focus on our content. Now let's discuss the importance of social media in today's world. First, staying connected with the people. It is next to impossible to meet your friends and relatives every day in today's world of increasing stress and workload. However, dropping a short text, asking about their day, or sharing your achievement are a few ways you can still maintain healthy contact with your close ones or corporate colleagues. Social media platforms have effectively bridged the communication gap. Next importance is staying opinionated. In our daily lives, we may not necessarily be surrounded by people who think in the same direction as we do. A difference in opinion is bound to occur. However, we can share our opinions safely and even find people online who think the same way as us on social media platforms. It even paves the way of gaining a strong voice for the situation you feel are essential to discuss and have fruitful discussions. The third point is entertainment. There is so much more to social media than just work, communication, and branding. Sometimes all we want is a little entertainment at the end of the day. Social media platforms provide tiered individual and customized feed consisting of memes, news, and short clips of videos as per the user's activity. It provides people with a much needed break from their busy schedules. Now let's discuss the benefits of social media for businesses. First is direct contact with target audience.
Thanks to social media platforms, you do not have to call or email every randomly to check if they are interested in your brand or not, which almost the whole world on social media. It is possible that your target audience is simply a click away from you. Using hashtags are directly connect you with your target audience. Next is increasing the popularity with ease. For people in the content and digital marketing area, the ability to attract popularity is what matters most. The social media platforms provide such a section of people with precisely what they are looking for: increased exposure. Carrying out simple, engaging tasks such as answering queries, posting times, and so on would ensure that you blow up on the site and some time. Even though it requires some time investment, the hefty return was worth and at the end of the day. Next is better traffic. Since there is widely diversified of active people on social media, the scope of diverse traffic is also there. Optimizing social media per your need can ensure that you receive visits and traffic from various people. Since today people are on their phone most of the time, it is highly likely that people would come across to your brand or work. Proper usage of keywords and other SEO guidelines would also ensure heavier and better traffic. Next is creating a lasting image. If you are looking to work so that your piece of content leaves an imprint on the viewer's brain, using social media is the best way to go about it. Granted, people do look at the emails too, but how often can we find people spending hours suffering through their email? In contrast with, people love spending countries hours suffering through social medias on their phones. Hence, if you are optimize your work efficiently there, you will likely leave your mark. Next is collaborations. Another effective way of social media platforms benefit businesses is by providing the means of collaboration with appropriate accounts. Today, there are many influencers on every social media platform, each open to promoting the product they deems fit for their followers. Businesses looking to grow journally contact such influencers who do pay ads on their pages, bring heavy traffic to the business accounts. Next is availability of tools for analysis. Another aspect of social media is that fuel. Its importance among us, the business and content creator, is in the option to look into the inside. Hence, business and content accounts can analyze their post and understand what post gained the most popular and why, and how they can improve their feeds. On Instagram, there is an option for post insights for professional accounts, where one can see what post got the most saves, likes, and results. Last benefit is get inspired. Since most content and business pages are public, one can quickly go through their feeds and gain inspection. If your account is not doing expectedly well compared to the other account in the field, you can analyze their fields and see what you are missing out of. Fixing this problem that can help you to boost your popularity immediately. Now let's discuss the world tea market. The global tea market was valued at near 200 billion US dollars in 2020 and is expected to rise over 318 billion
by 2025. Tea has a long history of popularity worldwide. It is through to have originated in China, with records of it using dating back of 3rd century AD. Originally used as a medicinal beverage, the drink was popularized for recreational use during a Tang density and spread to the Asian countries. After European traders brought the leaves back to the Europe in 16th century, its popularity spread in the West as well. Now let's discuss few things. The European green tea was valued at US dollar 1650.8 million in 2018 and is projected to reach US dollar 2810.8 million by 2027. It is expected to grow at a CAGR of 6.1% during 2019 to 2027. The United Kingdom is the largest market. The challenging lifestyle of people are gradually amplifying the importance of herbal tea, and large part of the population now prefer herbal tea over caffeinated form of tea. High nutritive of herbal tea, and a large part of the population now uses fat burning propositions in green tea play a significant role in driving the growth of the tea market. During the pandemic, due to the engagement of the individual in survival work, the stress level rises eventually. Therefore, consumers of this region prefer tea as a stress reliever drink, as consumption of tea reduces stress hormones with a cortisol. Therefore, customer demand for tea is rising in the region, which has driving the market. Tea market in India. The tea market in India is being driven by the healthy production and consumption of the beverages. In 2020, nearly 1.10 million tons of tea was consumed in the country. Significant growth in the tea and food and beverages industry is one of the key factors creating a positive outlook for the market. India is among the largest producer and consumer of tea across the globe, and tea has emerged as one of the most cost-effective and health beverages. Moreover, increasing consumer preference from premium and packed teas is providing a trust in the market growth. North India is the leading region for the industry in India, accounting for over three-fourths of the industry. Black tea is the largest segment in the tea industry in India. The tea industry in India is being driven by the high penetration of the beverages in the country across socio-culture class. Indians' healthy economic growth and the subsequent rise in the middle class population are also providing to be catalyst for the industry growth, as well as the consumer are preferring premier brands. The market in the country is projected to witness a further growth in the forecast period of 2022 to 2027, growing at a CAR of 4.0 in 2026. The tea industry in India is expected to attain 1.40 million tons. Now let's discuss the SWOT analysis. First is strength. Under this, uniqueness, best in class, handmade, pan India, make in India. Then weaknesses is consumer awareness, taste and preferences, less mentorship. Opportunities is in export, B2B, rise in world tea market. Threat is early entry and exit, and safety of parcels. There are a lot of up and downs that suffer to the student, that is no support from others, low capital, doing all work single-handedly, brother could not help much because of job.
statement for some, magic potion for many. Tea, one of the most aromatic beverages in the world, enjoyed in multiple countries with over 20,000 well known varieties, and the second most consumed drink after water. India is obsessed with their chai and grows some of the finest tea, and not surprisingly, amongst the top 3 tea producers in the world. Every third cup of tea consumed comes from India. Today, we bring you a story of a young entrepreneur who started his own tea brand. लॉकडाउन के राउंड जब सब घर में थे, सब बंद था, तो उस टाइम एक आइडिया था आया कि लेट्स डू समथिंग। इस आइडिया की बैक स्टोरी से मैं बताता हूँ। एक्चुअली द थिंग वाज, हमारा पालमपुर में टी का गार्डन है, तो हम नॉर्मली अपने घर में तो वो चाय यूज़ करते हैं। तो भाई की जैसे वर्किंग थी जॉब, तो कभी मुंबई कभी कहाँ, तो वो अपने जब उसने बाहर ये चाय दी, टेस्ट करवाई, तो लोगों को काफ़ी पसंद आई, क्योंकि असम टी को लेके लोग बहुत पीते थे, वो बहुत जनरल हो गए थे। और ये हिमाचली कांगड़ी टी बहुत अलग, उनको एक पैलेट में ना बड़ा एक अलग सा टेस्ट देती थी। तो उस टाइम हमें ये भाई को ये हुआ फील कि यार ये चीज़ बहुत प्रोमिनेंट चीज़ है, कि ये बाहर अभी आई नहीं है। हमने रखा कि चलो यार ब्लैक टी ग्रीन टी तो है, अब हमारा एक डिफरेंशियल फैक्टर क्या होगा जो हमें मार्केट में स्टैंड आउट करेगा। एक चंबा के आगे एक गांव है, उसका नाम आई कांट से। मैं, पापा, मेरा भाई गए थे चाय लेने। बहुत मुश्किल से हम वहाँ उस गांव तक गए। अब उस गांव की खासियत ये है कि वहाँ के लोग ये चाय पिछले पता नहीं कितने सालों से चाय पी रहे हैं। तो जब हम वहाँ गए तो दे फाउंड कि यार लोगों को अब पता चल रहा है इस चाय के बारे में। तो वहाँ पे मेन था कि इस चाय का अब मिलती ही कम है, अराउंड पर सीज़न 100 किलो के राउंड चाय बनती है ये। और उसका नाम आई कांट से, क्योंकि वो एक बहुत टॉप सीक्रेट मेन था कि अब नाम क्या रखना है। आप बिलीव नहीं करोगे कि हमने इतना पैसा खर्च किया, कि हमने लेजिट पैसे पे करे हैं। बट कहते हैं कि चीज़ें घर की बहुत, मतलब घर में जो चीज़ हो तो अच्छा होता है। तो हम ऐसे बैठे थे, तो मम्मा ने नाम दे दिया। तो मेरी कंपनी का नाम है NUARHI, नुहारी। तो इट्स अ पंजाबी पहाड़ी वर्ड फॉर ब्रेकफास्ट। तो नुहारी टी, ब्रेकफास्ट टी, तुम्हारा वहाँ से नाम आ गया था। जब नेम वाला सब हो गया सेट, तो हमने वही साइट वगैरह बनाई, इंस्टाग्राम ID सब शेयर कर लिया। तो हमारा कंपनी मेनली स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद हमने वही एक मार्केट टेस्ट करा कि भाई ये चाय मार्केट में रन कैसे करते हैं, कि अपार्ट फ्रॉम पीपल दैट वी नो, उनके अलावा एक नॉर्मल आदमी हमारी चाय क्यों बाय करेगा, इस चाय में ऐसा क्या है। तो हमने वही 1 साल पूरा वो मार्केट रन करके देखा। अब मेन बात ये आती है कि लास्ट ईयर एक बहुत ट्रेजिक थिंग हुई। हमारे नानू जो है, उनका खुद का एक चाय का है बाग, तो उनके थ्रू ही हम चाय वगैरह बाय करते थे। तो लास्ट ईयर डेथ हो गई उनकी। उस कारण एक बहुत इमोशनली फील हुआ कि यार अब इस चाय के काम को ऊपर तक लेके चाहेंगे। नानू भी चाहते थे कि ये चाय का काम पूरे वर्ल्ड को पता हो कि भाई हिमाचली टी, पालमपुरी टी है। क्योंकि इफ आई टेल हिस्ट्री अ बिट, कि 1905 में जब हिमाचल में अर्थक्वेक आया था, उसमें मेजरली 80% सारे टी फार्म्स तबाह हो गए थे, सब अर्थक्वेक में चल गए थे। तो इट वाज ओनली असम वाले टी फार्म्स और पालमपुर में जो है इस टाइम। तो जो असम वाले टी फार्म्स है वो हाइब्रिड हो गया, दे हैव हाइब्रिड प्लांटेशंस, तो उनका टेस्ट एंड वो सब चेंज हो गया है। और जो पालमपुर वाले, दे आर द स्टिल OG टी फार्म्स, जो अंग्रेज चाइना से लेके आए थे इन 1880s। तो इसको हम चाइना टी कहते हैं। वर्ल्ड में बहुत टीज होती है, बट एक चाइना टी इज वेरी फेमस टी, ये वर्ल्ड के 3rd या 4th रैंक में आती है। तो ये वही फेमस पुरानी ओल्ड OG चाइना टी है। तो इसी कारण इसका टेस्ट इज वेरी
डिफरेंट फ्रॉम द एसएमएस टी। बट यहाँ आके ये हमारा बेसिक कंपनी इस वे से हुई थी स्टार्ट। तो अभी पिछले 2 साल का अगर बताओ, जैसे हमारा हुआ कि हमने 2020 की एंडिंग में ये चाय का काम स्टार्ट कर दिया था। तो आवर मेन एम वाज टू टेस्ट की मार्केट पहले कैसी है, मार्केट में हमारी चाय बिक रही है कि नहीं बिक रही, क्या सीन है मार्केट में। तो वो हमने 1 साल करा, ऑनलाइन अमेजोन ऑफलाइन स्टोर्स में हमने 3-4 जगह अपनी चाय दी है। इट वॉज ओके रिस्पॉन्स कि लोग ले भी रहे थे, वापस भी आ रहे थे बाय करने। फिर लास्ट ईयर से क्या हुआ कि इतना हम ज़्यादा इंक्रीज कर नहीं पाए सेल्स, बिकॉज कि भाई की भी होती है जॉब एंड ऑल्सो मेरे को कॉलेज एंड अपना सब हैंडल करना था। सो व्हाट वी डिड कि आवर मेन स्ट्रेटेजी वॉज नॉट टू सेल अभी, वॉज टू एजुकेट पीपल कि हिमाचली टी क्या है। सो फॉर दैट वी डिड एग्जीबिशंस, स्टॉल्स, फिर जो प्रोमिनेंट कैफेज एंड स्टोर्स है, प्रीमियम स्टोर्स है ट्राइस सिटी के, वहाँ पे हमने चाय दी। वहाँ पे अभी भी हमारी चाय है, आई थिंक स्टॉक ओवर हो गया। बट हाँ अभी 1 साल में जब हम प्रॉपर मार्केट लॉन्च करा हमने, ड्यू टू सम रिस्ट्रिक्शंस नहीं कहूँगा, मतलब भाई की जॉब है, मेरा कॉलेज सब एंड ये सब, इस सब में इतना हम बिजी होने लगे कि चाय के काम को ज़्यादा हम टाइम दे नहीं पाए। बट हाँ एक ये है कि चल रहा है, अभी विद टाइम ये और इंक्रीज होगा, बिकॉज ये मार्केट इज़ वेरी नीश। हिमाचल लिंक सब कुछ जो अभी तक हिमाचल के बाहर नहीं आया या किसी गांव के बाहर नहीं आया, वो सब आइटम्स निकाल के हम पूरे वर्ल्ड में लेके जाए। अभी जैसे हमारा मेन एम है कि चलो एक टी ब्रांड तो बनना है, बट वी ऑल्सो वांटेड, अगर मैं बात करूँ कि हाँ 10 साल में 20 साल में हमने कहा होना है कि वी वांट कि हम टी ब्रांड के साथ एक हॉस्पिटैलिटी ब्रांड भी हो। फॉर दैट वी आर थिंकिंग कि हम टूरिस्ट जैसे हिमाचल में काफ़ी आता है, अब उसको इस साइड, इस टी वाले एरिया के साइड उनको लेकर आना है। फॉर दैट अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी वी आर इन टॉक विद सम ऑफ आवर फ्रेंड्स कि हम एक लैंड लीज में दे रहे हैं। तो हम 2 लैंड दे रहे हैं, एक हम पालमपुर साइड में एक टी फार्म लीज में देंगे एंड एक प्लेन्स में एक नॉर्मल एग्रीकल्चरल लैंड देंगे। हमारा मेन ये है कि जो टी फार्म वाला होगा हमारा लैंड, उसके अंदर ही थोड़ा एरिया खाली करके विल मेक रूम्स एंड लाइक वहाँ पे टी टेस्टिंग होगी, उनको हिमाचली कल्चर के बारे में लोगों को इन्फॉर्म करेंगे, एजुकेट करेंगे, और टी फार्म के अंदर ही उनका रूम होएगा तो दे गेट टू नो कि हाँ टी कैसे बनती है, उनको प्रॉपर एजुकेशन देंगे। सेम वे जो हमारा एग्रीकल्चर होगा लैंड, वहाँ पे भी हम सेम चीज़ करेंगे, लोगों को बताएंगे कि व्हाट इज द देसी वे एक हिमाचली का वो क्या होता है। जब हम ऐसी आइटम्स जो हिमाचल में है और पूरे मतलब उसके बाहर कभी गई नहीं है, एंड वो चीज़ें हम लॉन्च करके जाएंगे, मतलब लॉन्च करने वाले हैं, तो वो देख के लोग तो आएंगे भाई ये चीज़ हिमाचल में हम इतनी बार गए। मतलब कोई पंजाबी मान लो, लाइक वो कहता है इतना मैं हिमाचल घूम चुका हूँ, बट आई एम डैम श्योर कि फॉर वंस ही विल से कि यार ये चीज़ मैंने आज तक नहीं देखी। तो हमने यही वाओ चीज़ इन आइटम से हमने लोगों को हिमाचल में और अट्रैक्ट करना है। डिफिकल्टीज अगर मैं कहूँ पिछले 2 साल में क्या फेस हुई है कि अगर मैं सब स्टार्टिंग सेल से कि ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आई थी हमारी, चाहे आना लेके जाना, क्योंकि वो प्रैक्टिकल नहीं था कि हम टैक्सी करें या बाय बस ही होता था, तो वो भी बहुत 30 किलो 40 किलो आना एक बार में। फिर एक बार वो मेन प्रॉब्लम थी स्टार्टिंग में। उसके बाद मेन हमारी दिक्कत आई है कि लोगों को हिमाचली टी के बारे में नहीं पता, ठीक है। तो उसमें पहले हमने लोगों को एजुकेट करा है कि ये नॉर्मल बंदे, स्टोर के मालिक, कैफ़े के ओनर्स, उनको जा के हमने चाय टेस्ट, क्योंकि नया है ब्रांड ये मार्केट में, और हमारा मेन था कि हमने कुछ मिक्स नहीं करना, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ अपने चाय के साथ मिक्स नहीं करनी, बेशक हम उसको अलग से सेल करेंगे। और इंडियन मार्केट वैसे नहीं है, हमें चाय में वही अदरक, रोज़, इलायची अच्छा लगता है। तो हमारा मेन है कि हम एक थोड़ा ऑपोजिट थोड़ा लेके चल रहे हैं। प्लस
एक दिक्कत ये आई थी कि नया ब्रांड है, पैसे नहीं है, इतना बूटस्ट्रैप्ड है सारा, पैकेजिंग करना, तो कभी कभी दिन के 100 बॉक्सेस, 50, बहुत सारे, इतना मेरे को याद है कि हम एक हफ्ते में हमने कम 1000-2000 बॉक्सेस पैक करे थे मैंने अकेले घर बैठ के। कॉलेज छोड़ के घर जाना, एक हफ्ता घर लगाना, वहाँ पे सारा पैकिंग करके फिर आना, साथ में चाय लेकर आनी जो पैक करी है, ताकि यहाँ की मार्केट को मैं चाय दे पाऊँ। तो वहाँ की लैक ऑफ पीपल, कोई एक्स्ट्रा बंदा नहीं था, एक वो बहुत बड़ी दिक्कत थी। प्लस कोई कैफेज में बार बार जाना, उनको बात करना। अब वो था कि कभी बिजनेस स्टार्ट नहीं करा कि भाई कैसे क्या करना होता है, पर 2 साल में इतना ये समझ आ गया कि आप जितने बेशरम बनते जाओगे उतना ही अच्छा है। तो अगर आप जितना उनके पास जाओगे, सर ये चाय देखो, टेस्ट करो, क्योंकि पहले अंदर वो फील होता है हम क्यों गए, क्यों करना है चीज़, एक बार उसने ना कर दी, बट नहीं, अब ये समझ आ गया है कि अब जितना बेशरम बन जाओगे ना, तुम्हारे लिए यही फायदा है, उसके बिना कुछ नहीं हो पाएगा। कभी सोचना नहीं कि तुम जो भी फील्ड से हो, बीकॉम कर रहे हो, मैकेनिकल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तुम एक बिजनेस किसी भी फील्ड में खोल सकते हो। So to all young entrepreneurs who are thinking of starting a new business, पिछले 2 साल में we have faced a lot of problems, and these problems has made what Nuhari Teas is today. So हर चीज़ को increase scale up होने में time लगता है. It is your efforts and your consistency which makes you scale up your business.